dear students, in the previous lecture of English, we had completed our lesson number 4.8, that was reading time, and in that we learned about the things which are in the park. And in today's lecture, I am going to teach you the chapter number 4.9, and the name of the chapter is writing skill. So for that, we will take out page number 63. तो सब लोग पेज नंबर 63 पे ध्यान देंगे. What is there? Listen, choose your favorite story character and draw it in the box given below. So students, you heard so many stories in this textbook and outside also you heard the various stories, है ना. तो यहाँ पे आपने टेक्स्ट बुक में अलग अलग स्टोरीज पढ़े हैं और आपको अलग अलग भी स्टोरीज आपके मम्मी पापा आपको बताते होंगे. So from that story, the character which you like more, you may draw the picture of that character here. तो उस स्टोरी में से आपको जो भी कैरेक्टर मतलब जो भी पर्सन आपको अच्छा लगा होगा तो उसका पिक्चर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है. ओके, एंड यू ऑल्सो कलर दैट पिक्चर, और उस पिक्चर को आपको कलर भी करना है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने अलग अलग स्टोरी पढ़ी थी, जैसे नानीज ग्लासेस, है ना, आपने नानीज ग्लासेस को स्टोरी भी पढ़ी थी. Then we also learned the stories about the Arjun and his cousin and his brothers. वो भी स्टोरी हमने पढ़ी थी. तो उसमें से आपको अगर कोई कैरेक्टर अच्छा लगा होगा, जैसे आपको अगर अर्जुन का कैरेक्टर अच्छा लगा होगा तो आप वो पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो. एनी पिक्चर which you like, you may draw that picture here. Okay student, now next is there, write at least 5 sentences about it in your own notebook. और उसके बारे में, वो कैरेक्टर के बारे में आपको लिखना है. तो ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो भी पिक्चर आपको ड्रॉ करना है वो आप खुद ड्रॉ करने वाले हैं ना, तो वो मैं आपको ड्रॉ करके नहीं देने वाली. ओके स्टूडेंट, सो यू मे डू इट. नाउ कम ऑन द पेज नंबर 64. अभी पेज नंबर 64 देखो. बी, राइट 5-7 sentences about your classroom. So here we have to write the 5 to 7 sentences about our classroom. मतलब यहाँ पे हमें अपने क्लासरूम के बारे में इंफॉर्मेशन लिखने की है. But for that they had given some point to us. उसके लिए उन्होंने हमें कुछ पॉइंट दिए हैं. Now I will read that point. You may listen it carefully. So what points are there? First, that things in your classroom. So first of all, you have to remember your classroom. तो आपको आपका क्लासरूम याद करने का है ना, because from the so many days you are at home and that's why you forget your classroom ना. तो बहुत दिन से आप घर पे हो तो आपको शायद क्लासरूम याद नहीं होगा, but you have to remember that your classroom, that what things are there in your classroom. तो हमारे क्लासरूम में क्या क्या चीजें हैं, that you try to remind, वो आप याद करो. Then next, number of doors and windows. So how many doors and windows are there for our classroom, that we have to remember. है ना, हमें वो याद करने का है कि हमारे क्लासरूम को कितने डोर्स है, कितने विंडोज है, तो वो भी हमें याद करना है. Then number of table and desk or benches. So student, in our classroom all the students have their benches and desk. हर एक स्टूडेंट को बेंच होते हैं and the teacher also having the chair and table. So how many tables, then how many benches are there in your classroom, that also you may write here. Next thing is that number of students. So how many total students are there in your classroom, that also you may note down here. Then number of charts in your classroom. So each class having the charts, है ना, हर एक क्लास में चार्ट्स होते हैं. तो हमारे क्लास में कितने चार्ट्स है ना, कितने चार्ट्स हो गए, वो भी हमें याद करके उसमें लिखना है. ओके स्टूडेंट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शो यू दैट विच थिंग्स आर इन आवर क्लासरूम. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे क्लासरूम में कौन सी चीजें होती हैं. एंड आफ्टर वाइल वी विल राइट सम lines, means 5 to 7 lines about our classroom in our textbook. तो उसके बाद हम लोग टेक्स्ट बुक में क्लासरूम के बारे में 5 से या 6 लाइन हम लोग लिखेंगे. So student, please listen it carefully. Student, you may observe in the picture, these all are the classroom objects. Now I will read the names of these classroom objects. So first is blackboard, second book, then chair, then desk,
next is table, then duster, next is eraser. It is the picture of globe, then it's a notebook, then this is pencil sharpener, next is a ruler, then pen, pencil and pencil case. So these all are the classroom objects, means the things which are in our classroom and the things which we use in the classroom for teaching and for learning and also for the reading. तो बच्चों ये सब जो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है तो ये हमारे क्लासरूम में होती है. इन सब चीज़ों का हम लोग हमारी पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं. आवर टीचर एंड स्टूडेंट यूज़ दिस ऑल थिंग्स for the teaching and learning process. Okay, student. Now we will write some lines about our classroom. So first, my school name is SSK Public School. Second, I study in class 2nd. Then there are blackboard, chalks, duster, books in my classroom. Then next, there are 25 desks and benches in my classroom. Then next sentence, it has one door and two windows. It has one door and two windows. मतलब मेरे क्लासरूम को एक डोर है और दो विंडोज है. Then there are 50 students in my classroom. Inside the classroom, there are many charts on the wall. Many charts on the walls. And last one, I like my classroom very much. I like my classroom very much. Okay, student, in this way we write here 8 lines about the classroom. I will read it again. My school name is SSK Public School. I study in class 2nd.
There are blackboard, chalks, duster, books in my classroom. There are 25 desks and benches in my classroom. It has one door and two windows. There are 50 students in my classroom. Inside the classroom, there are many charts on the walls. I like my classroom very much. Okay students, so in this way, today we learn about our classroom and we also write some lines about our classroom. तो हमारे क्लासरूम में क्या क्या होता है उसके बारे में आज हमने सब लिखा है. So you may copy down these all 5 to 7 lines in your textbook as well as in your notebook. तो आपको ये सब नोटबुक में भी लिखना है और टेक्स्ट बुक में भी लिखना है एंड यू ऑल्सो रीड इट केयरफुली. आपको ये रीड भी करना है. ओके स्टूडेंट, सो टुडे आई एम गोइंग टू कंक्लूड माय लेक्चर हियर. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट विद द नेक्स्ट and another topic. Okay student, so thank you and have